Hello everyone, I hope you are fit and fine. Today, in this video session, we are going to see the lesson 1.6 Into the Wild. Into the Wild is a lesson written by Kiran Purandare. Let me tell you something about Kiran Purandare first. Kiran Purandare is a wildlife activist. And of course, remember this person is very famous for his book Sakha Nagzira. He is the person who is doing a tremendous work in the field of bird watching, and he's always in the favor to conserve the nature and environment. So without wasting the time, let's see the warming up activities of the lesson Into the Wild. So in the warming up activities, we have few questions which were very important in terms of the theme of the lesson. So let's see the first question here, that is, narrate in your class any of the incident of your life when you were extremely terrified or awestruck. It means when you actually awestruck, when you were actually terrified in your life, you have to share that experience with your class. आपको अपनी लाइफ का कोई भी एक ऐसा मोमेंट बताना है कि जब आप अपनी लाइफ में बहुत डर गए थे. Of course, remember in our life so many such kind of the incidents were happened when we were actually struck, when we were actually terrified, we were frightened, we were actually awestruck. So let me tell you a few of the examples. When suppose you met with an accident, that time you were terrified. हर कोई डर जाता है जब वो एक्सीडेंट या उनके साथ या किसी के भी साथ जब एक्सीडेंट हो जाता है. So that time remember people were actually frightened. Maybe sometimes we were alone when we were walking on the road, and of course remember that time suppose you have the idea of the ghost in your mind. Suddenly that fear comes to your mind and definitely you were awestruck. आप डर जाते हो, कोई भी हल्की सी आवाज से भी आप डर जाते हो. So that time remember we were actually terrified. So such kind of the experiences we have in our life, that time we were actually terrified. I hope you have understood this particular question. After the discussion on the first question, we are going towards the next one, in which remember complete the given table regarding the factors, situations or reasons why you sometimes get scared and the factors that add to it. Give possible solutions as well. So here you will have one table in which remember some of the reasons were there, some of the factors were there, and some of the solutions were there. So this particular table divided into three parts. So first one is already solved. So let's see what was that. So first one is, while discussing about strange creatures. It means strange creatures we have in this particular universe, and so many strange creatures. Those creatures when we actually seen them, we were scared. हम डर जाते हैं, काफी डर जाते हैं. And of course remember the factors which add to it. So at midnight, if you are discussing about the strange creatures, think about the situation. चारों तरफ अंधेरा है और अंधेरे में आप ऐसे क्रिएचर के बारे में बोल रहे हो जो क्रिएचर बहुत टेरिफाइड, दिखने में बहुत टेरिफाइड है, दिखने में बहुत भद्दा है. So of course remember that time you were actually get scared. And when there is no one in your house, suppose there is an absence of your parents in your home, you were alone, and if you are thinking about such kind of the creature, तो ऐसे situation में आप definitely क्या हो जाओगे, डर जाओगे. And here solution is what that avoid such discussions in the night. So that was the probable solution. आप ऐसा कर सकते हो कि जब भी आप अकेले होते हो, जब भी घर में कोई नहीं होता, तो आप ऐसे क्रिएचर के बारे में या फिर ऐसे डिस्कशन पे आप बातचीत ही मत करो. So that is one of the good solution everyone has. Okay, and even remember you can avoid the stories such they are baseless. So just remember, remind yourself that whatever the thoughts which came to your mind, so these thoughts were actually baseless, because ghosts or such kind of the creatures, so these were the imaginary kind of the things. So you can instruct your mind that such kind of the stories were baseless, यानी उनमें कोई भी रियलिटी नहीं होती. आप अपने माइंड को इस तरह से क्या कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो. So of course remember these are the some of the solutions. So now remember you have to think about the different situation.
So I have already solved the situation here that discussing strange ailments. It means if we are talking about the strange ailments, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में आज भी सोच के हमें डर लगता है. Take the example of COVID-19 now. So in this condition, if you are thinking about COVID-19 again and again, you'll be definitely get scared. And of course, remember here we don't have any kind of the treatment. We don't have any kind of the vaccine. So that was the factor which you can add to this particular ailment. And of course, if we are thinking about the solution on COVID-19 disease, so that time remember you can avoid seeing the advertisement, seeing the news regarding the COVID-19, and you can take the necessary precautions. So these are the some of the solutions. आप उस डिसीज के बारे में सोचो ही मत या फिर न्यूज को देखना पहले बंद कर दो. So that is the probable solution you have. And of course remember, take the necessary precautions. क्योंकि precautions लेना यही एक तरीका होता है जब आपके पास कोई exact solution नहीं होता. So you have to just think about the precautions, and you need to take care of yourself by taking the precautions at every stage, at every moment. That is very important. So this is one of the situation I have created. The next thing, that is fear of thieves or criminals. When remember you were alone in your home, basically such kind of the thoughts came to your mind कि आपके घर में अगर चोर घुस जाए या फिर कोई क्रिमिनल आ जाए तो ऐसे सिचुएशन में हर कोई डर जाएगा. सो ऑफ कोर्स रिमेंबर हियर व्हाट वाज द थिंग व्हिच यू नीड टू ऐड हियर. सो व्हेन यू वर अलोन, सो दैट टाइम रिमेंबर सच काइंड ऑफ थॉट्स probably come to your mind. And what was the solution? So you can use the precautions, or you can take the precautions. And of course remember, alarms you can set in your home. So alarms definitely help you whenever somebody, unknown person, maybe strange person came to your house. So such kind of the things you can do it as the precautionary level. So this is the probable situation. You can add so many situations, such kind of the situation in this table one by one. So the next question, we are moving ahead and we are going to think about the next one. So here also we have the table, and in this table things were different. So let's see. Given below are various activities which you can pursue on your hobby, passion and profession. Complete the table accordingly. So remember, so many activities are there, and on the basis of the interest, area of interest, we can choose the things as our hobby, maybe passion or maybe profession as well. So here painting is there. Painting में आपकी हॉबी हो सकती है, आपका एक पैशन हो सकता है, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग इसी पैशन को, इसी हॉबी को आगे चल के प्रोफेशन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं. So here remember, reason is what? That I can express myself well through the strokes of brush. अगर आप सोचते हैं कि आप strokes of the brush यानी पेंटिंग के जरिए, पेंटिंग के थ्रू अगर अपने इमोशन को, अपने एक अंदाज को बयां कर सकते हो, so definitely remember this is a good kind of the profession. So remember, likewise we have the traveling. So traveling is also one of the hobby, maybe किसी का पैशन हो सकता है, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इसको बाद में आगे चल के आप अपने प्रोफेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो. It is also possible. So reason, in tourism such kind of the jobs were available, and there is a great demand for professional tourist guides. So if you think about the guiding to someone, tourist place पे आपको इस तरह के गाइड बहुत सारे मिल जाएंगे. So remember, nowadays remember so many places were there which were actually so famous. यहाँ पे आप ट्रैवलिंग की, या ट्रैवलिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है, ट्रैवलिंग आपकी हॉबी है, आपका पैशन है, तो आप इसको प्रोफेशन भी बना सकते हो. दैट इज पॉसिबल. सो नाउ रिमेंबर, थर्ड वन इज वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी. सो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इज ऑल्सो वन ऑफ द हॉबी. दिस इज ऑल्सो द पैशन ऑफ द पर्सन, एंड ऑल्सो रिमेंबर दिस इज अ प्रोफेशन. सो रिमेंबर रिस्पॉन्सिबल, so challenge is what? That in the age of computers, limited professional scope is there. So wildlife photography, फोटोग्राफी में अगर अपना करियर आप करना चाहते हो तो इसके लिए स्कोप जो है थोड़ा सा कम है, क्योंकि इन द एज ऑफ कंप्यूटर्स दैट एवरीथिंग इज यू आर गेटिंग इन योर होम, बिकॉज वी हैव द चैनल्स which can exhibit such kind of the wildlife and so many channels are available. So in this age wildlife photography के लिए जो स्कोप है वो थोड़ा सा कम है,
But of course, remember, you can choose if you have the passion in it. And the fourth one is here, conserving environment. So conserving environment, this is the passion. इसको आप passion भी बना सकते हो, अपना profession भी बना सकते हो. And remember, responsible citizen इससे बनेंगे. And of course, remember, environmental activists you may be or you become environmental activists आप बन सकते हो. Take up the jobs like forest rangers, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत सारे जॉब्स होते हैं, वो भी आप कर सकते हो. एंड ऑफ कोर्स रिमेंबर, एनवायरमेंट साइंटिस्ट भी आप बन सकते हो. सो मेनी रीजंस वर देयर इसको चूज करने का, या कंजर्विंग एनवायरमेंट अगर आपका पैशन है, आपकी हॉबी है, या इसको आप अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो, सो डेफिनेटली इट्स पॉसिबल. द नेक्स्ट वन इज बर्ड वॉचिंग. सो बर्ड वॉचिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द हॉबी, इट्स ऑल्सो वन ऑफ द पैशन, इट्स ऑल्सो वन ऑफ द प्रोफेशन. इन दिस लेसन डेफिनेटली यू विल गेट द आइडिया कि इसको आप अपना प्रोफेशन किस तरह से बना सकते हो. लाइक किरण पुरंदरे. सो लेट्स सी दैट कैन बिकम एन ornithologist. Ornithologist is a person who is studying the birds, or the person who is involving in the study of the birds. So such kind of the person you become. And of course ecologist आप बन सकते हो, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट बन सकते हो, एनवायरमेंटल एजुकेटर बन सकते हो. So many jobs were available in this particular field. And of course nowadays, day by day, the environmental issues were major one, and we need to think about the environmental issues. So many areas, new kind of the areas were now evolved. And of course remember, you will get the jobs in these areas also, because this is one of the new sector. जब भी कोई नया सेक्टर बनता है तो उसमें जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिल जाती है. सो नाउ रिमेंबर, आफ्टर डिस्कसिंग on this particular table, we are moving ahead, and we're going to discuss about the last table. And of course here you need to match the following wildlife sanctuaries with their location. Sanctuaries means this is a protected area for the birds, or maybe for animals. And of course here protection is the prime purpose. And of course we need to preserve the species, creatures which are on the verge of the extinct level. So here some of the wildlife sanctuaries are there from India, and you need to remember, you need to think about the areas in which they were situated. So the first one, Bandipur National Park. So Bandipur National Park is in Karnataka. If you would like to visit the Bandipur National Park, you need to visit Karnataka. Karnataka is a state of India. So many states were there, and you have to think about the exact state in which these sanctuaries were situated. So the next one is Kaziranga. Kaziranga National Park, जो गेंडों के लिए बहुत फेमस है. ओके, सो काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन असम में है. The next one, Jim Corbett. This is very famous kind of the sanctuary. Jim Corbett National Park. This is in उत्तराखंड में situated है. अगर आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देना है तो आपको उत्तराखंड जाना पड़ता है. सो ऑफ कोर्स रिमेंबर, द नेक्स्ट वन इज रणथंबोर नेशनल पार्क. दिस इज इन राजस्थान में आपको विजिट देनी पड़ेगी अगर आपको ये जो नेशनल पार्क है देखना है. द लास्ट वन इज कान्हा नेशनल पार्क. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस पार्क और द सैंक्चुरी, एंड दिस सैंक्चुरी इज इन मध्य प्रदेश. सो मध्य प्रदेश में ये जो सैंक्चुरी है वो आती है. So I hope now all the doubts were clear about the icebreakers. So after the discussion on icebreakers, we are moving ahead. So अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, so please subscribe our channel for new and innovative learning of English language, and don't forget to press the bell icon. So after discussing on the icebreakers, we are going to discuss about the person who is the main protagonist of this extract. So of course Kiran Purandare, who was born in 1961. After BCom, this person studied environmental studies at Jordan Hill College of Education in Scotland. So इनका education है वो environmental studies में हुआ है, environment subject में हुआ है, and this person joined Jordan Hill College of Education in Scotland. So Scotland में इनका एजुकेशन पूरा हुआ. So he is pursuing BCom. BCom करने के बाद में इन्होंने environmental studies में अपनी
जो मास्टर्स है वो की। ही इज अ रेसिपिएंट ऑफ द साहित्य पुरस्कार। साहित्य पुरस्कार इज वन ऑफ द मेजर रिवॉर्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। एंड ऑफ कोर्स मैंने पहले भी आपको बताया है कि इस इंसान ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं एंड दिस पर्सन इज क्लोजली कनेक्टेड विद द एनवायरमेंट। सो पुने's भाई माधव बागल अवार्ड, that is also one of the prestigious award and best literature award given by the culture department of Maharashtra state for his Sakha Nagzira. He had written this book and this book is very famous. Sakha Nagzira, जो बुक उन्होंने एक साल प्रोटेक्टेड एरिया में रहने के बाद में लिखी थी। एंड ऑफ कोर्स दिस बुक इज वेरी फेमस बिकॉज दिस इज क्लोजली कनेक्टेड विद द रियलिज्म एंड ही स्पेंट 400 डेज इनसाइड नागसीरा। नागसीरा जो एरिया है महाराष्ट्र का, तो वहां पे इन्होंने 400 दिन बिताए और वो 400 दिन जो उनका एक्सपीरियंस रहा था, तो वो एक्सपीरियंस इन्होंने इस बुक में क्या किया है, लिखा हुआ है, लोगों से शेयर किया हुआ है। सो ऑफ कोर्स रिमेंबर नियर फॉरेस्ट एरियाज एंड रोट दिस अवार्ड विनिंग बुक। इसी बुक के लिए उन्हें साहित्य अवार्ड भी दिया गया है। एंड दिस एक्सेप्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द सेम, दिस एक्सट्रैक्ट which was also taken from the same book, Sakha Nagzira. इस बुक से ये जो एक्सट्रैक्ट है वो लिया गया है। एंड ऑफ कोर्स रिमेंबर ही इज ए वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, ए बर्ड वॉचर, ए राइटर एंड ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन इन महाराष्ट्र। सो दिस पर्सन इज अ बर्ड वॉचर, ornithologist, and of course remember this person is a writer as well, and he is one of the honorary person who belongs to the wildlife and he is very much interested in this field. He is also the founder of निसर्ग वेद ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी एस्टैब्लिश की है जिसका नाम है निसर्ग वेद ऑर्गेनाइजेशन, which works for nature conservation and community work around नागसीरा, नवेगांव। नवेगांव में जो नागसीरा है, ये जो एरिया है, वहाँ के कम्युनिटी के लिए, वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए इस इंसान ने बहुत सारा काम किया हुआ है। एंड ऑफ कोर्स रिमेंबर ए टाइगर रिजर्व इन भंडारा एंड गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में भी उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है निसर्ग वेद ऑर्गेनाइजेशन एक काम करती है। ही ऑल्सो फाउंडेड किकास बर्ड्स क्लब, किका उनको ही कहा जाता है, किका दिस इज अ पेन नेम ऑफ किरण पुरंदरे एंड ही हैड फाउंडेड दिस पर्टिकुलर क्लब, किकास बर्ड क्लब, in order to spread bird farming, which is a very popular among school going children of Maharashtra. Remember, he has started the innovative concept of bird farming which is so popular nowadays. अभी के ज़माने में ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत पॉपुलर हुआ है। एंड ऑफ कोर्स रिमेंबर that bird farming is a very much popular kind of the concept among the school going children of Maharashtra. So part first we are going to see, and of course in this part first what you are getting, so this extract is taken from his famous book. Which book? Do you remember the name? So the name of the book is Sakha Nagzira. So in this first part, as the name suggests, the excerpt is an amazing experience of the writer where Kiran Purandare, the solitary traveler, is completely lost in the jungles of Umbarzara. He narrates how he lost his way at the fall of the dusk and the terrifying turmoil he underwent thereafter. Shouting for help would literally mean crying in the wilderness. He also gives a detailed description of how he found his way towards the पिटेसरी। पिटेसरी इज वन ऑफ द प्लेस नियर बाय। तो यहाँ पे पहले पार्ट में आपको किरण पुरंदरे अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सो आपको दिस पर्सन हैड स्पेंट सो मच ऑफ हिज लाइफ इन द फॉरेस्ट एंड एज अ सॉलिटरी ट्रैवलर। सॉलिटरी का मतलब होता है ये अकेले रहते थे। ही इज द पर्सन हु इज वॉचिंग द बर्ड्स, who is watching the animals as well, and he was one day completely lost in the forest. एक दिन क्या हो जाता है, ये जंगल में गुम हो जाते हैं और उन्हें उस जंगल, जो उम्बरसरा का जो जंगल है वो बहुत बड़ा है और उन्हें जाना होता है कहाँ पे, पिटसरी। पिटसरी इज वन ऑफ द प्लेस, वन ऑफ द स्मॉल विलेजेस देयर। तो वहाँ पे उन्हें पहुँचना होता है, लेकिन रात के अंधेरे में ये अपनी जो राह है वो भूल जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। तो किस तरह से उनका एक्सपीरियंस था, किस तरह से वो घबरा जाते हैं, किस तरह से बहुत सारी आवाज़ें वाइल्ड एनिमल्स की, बर्ड्स की वहाँ पे आती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत डर लगने लग जाता है। तो किस तरह से उनका एक्सपीरियंस था हम देखेंगे पहले पार्ट में। सो आफ्टर डिस्कसिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द पर्सन,
or the author of this extract, Kiran Purandare, we are moving ahead and we are going to see the beginning of this extract into the wild. So let's see the part first, Lost in the Jungle. So what is the name of the part first? Lost in the Jungle. तो कैसे वो गुम हो जाते हैं? Let's see. The 8.5 hour long day inside the hide was a fruitful as the jamba tree standing tall on the edge of Umbarzara. So Umbarzara is a place जहाँ पे आपको बहुत बड़ा जंगल दिखाई देता है. So 8.5 यानी 8.5 घंटे लगातार वो बर्ड वॉचिंग कर रहे थे और इसी दौरान जो जाम्बा इज वन ऑफ द स्पेसीज ऑफ ट्री, बहुत बड़े बड़े इसके पेड़ होते हैं. सो जाम्बा ट्री स्टैंडिंग टॉल ऑन द एज ऑफ उम्बरसरा, बहुत सारे पेड़ या पेड़ों से ये जो जंगल है वो बना हुआ है. दिस इज द मेन और मेजर स्पेसीज यू कैन सी इन उम्बरसरा. एंड ऑफ कोर्स उन्हें लगता है कि उनका जो दिन है वो बहुत अच्छा गुजरा है. सो दिस इज अ फ्रूटफुल डे. Before wrapping up my day at this natural water hole, I took entries of the avifauna in my field notes. So hide means here what? A place built to look like its surrounding. So this area in which you will get this so many species of the trees, so many species of the birds and the animals as well. तो इस जंगल में आपको बहुत सारे पेड़ दिखाई देंगे, बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे बर्ड्स दिखाई देते हैं. So he took the entries of the avifauna. Avifauna means what? Birds of a particular region, habitat or geological period. तो वहाँ पे वो क्यों गए थे? Because he studied the birds, and this is one of the type of the bird which he would like to study. And of course यहाँ पे ये जो birds है उनका habitat है. Habitat का मतलब रहने की जगह है, और दिस इज ए जोलॉजिकल एरिया जहाँ पे आपको इस तरह के बर्ड्स दिखाई देते हैं. सो हियर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द पर्सन इज अलोन. ही इज टेकिंग द नोट्स ऑफ द डे, एंड सिंस आई वॉज अलोन आई रश टू द पिट्सरी विलेज वेयर आई वॉज स्टेशनड. सो ही वॉज स्टेशन देयर. वहाँ पे वो रहने के लिए गए थे. कौन सा एरिया है? द एरिया इज कॉल्ड एज पिट्सरी. एंड आई कैमोफ्लेज्ड द हाइड, took my essentials, came out of the hide and stretched out to my heart's content. So hide means one of the place जो उन्होंने बनाई थी, क्योंकि छिप कर ही आप ऐसे बर्ड्स को देख सकते हो. Because birds were terrified when they seen the human beings. And of course remember, उन्हें लगातार 8 से 9 घंटे वो वहाँ पे उस एरिया में बैठे हुए थे. वो उन्हें ऐसे एरिया में बैठे थे जहाँ पे बर्ड्स उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन वहाँ से वो बर्ड्स को अच्छी तरह से देख सकते थे. थ्रू हिज कैमरा, थ्रू दी observation, and of course remember he's doing his job sincerely, and of course he's ready to went from this particular place, and he's going from that particular place. Camouflage means disguise by covering it to make it blend in with the surroundings. तो इस तरह से छिपना कि मानो कि आप एक पेड़ हो, मानो कि आप एक छोटा सा पौधा हो. So like this is a very important skill which you need to learn if you would like to observe the birds or animals. अगर आपको बर्ड्स को या एनिमल्स को नज़दीक से ऑब्जर्व करना है तो आपको ये जो स्किल है कैमोफ्लेज्ड, यू नीड टू लर्न इट वेरी फास्ट इन अ रैपिड वे. सो हियर रिमेंबर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द पर्सन इज नाउ गोइंग टू पिट्सरी. सो दिस इज वन ऑफ द विलेज विच इज और वेयर ही वाज स्टेशनड, जहाँ पे वो रहने के लिए रात में जाते थे. सो नाउ रिमेंबर आई लिफ्टेड माई camera back and took the family trail to Pitsari. So now remember he is going towards the Pitsari village by taking his all the essential material, his camera bag. तो सारी चीज़ें उन्होंने उठा ली और जो रास्ता था, जिस रास्ते से वो जाते थे, उस रास्ते को पकड़ के वो धीरे धीरे करके उस तरफ बढ़ने लगे. कहाँ पे? पिट्सरी विलेज की तरफ. So now remember negotiating the webbed, it making his way through this particular jungle. His webbed leaves of teak wood and moha trees trying to make minimal sound. I was treading cautiously among the woods. क्योंकि जब भी आप जंगल सफर पे निकल पड़ते हो तो जंगल में आपको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खूंखार जानवर भी हो सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं. So the person is now moving slowly towards his destination, and of course remember
The waved negotiating the waved leaves of teakwood and moha. Teakwood and moha, these are the types of the trees जो वहां पे देखने को मिलते हैं. And of course remember he is now making the minimal sound. Minimal means least sound. वो बहुत कम आवाज अपने पैरों की करके चल रहे हैं. Because I was treading cautiously, because he is now taking or he is carefully moving ahead among the woods. And walking alone in a jungle needs more alertness than the walking with a companion. Because nobody is there. उनके साथ में कोई भी नहीं, वो अकेले आगे चल रहे हैं. So of course remember the person is very frightened. क्योंकि ऐसे समय आपको बहुत cautiously आगे बढ़ना पड़ता है, बहुत केयर करके आगे बढ़ना पड़ता है. सो हियर रिमेंबर नाउ आई वॉज अलोन हियर लाइक ए फॉक्स. तो उन्हें लगता है कि लाइक ए फॉक्स ही इज अलोन इन दिस पर्टिकुलर एरिया. Following the trail silently, watching with the wide open eyes, my ears were grasping a variety of sounds. When a familiar sound stunned me. तो आगे चल रहे हैं, बहुत सारी आवाजें आ रही है क्योंकि अंधेरा हो रहा है और अंधेरे में जंगल में बहुत सारे जो जीव जंतु रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, दे वर एक्चुअली मेकिंग द साउंड्स एंड ही वाज एक्चुअली स्टन्ड बाय लिसनिंग द साउंड ऑफ ए मंकी. सो खैक खैक, खैक्स खैक. So this is a type of the sound which were making by the monkeys. So it was a langur. Langur means monkeys. This is a type of the monkeys. Langur alarm call. So जब भी वो किसी डेंजर को देखते हैं तो इस तरह की आवाज निकालते हैं. That is खैक खैक, खैक्स खैक. So that was the sound of langur. वो क्यों निकालते हैं? Because they would like to alert the other langurs and of course the leader of the gang. तो लंगूर का जो गैंग होता है, उनका जो लीडर होता है, वो बड़ी सी टहनी पे पेड़ के जाके बैठता है और वो आसपास के एरिया का ऑब्जर्वेशन करके साउंड निकालते रहता है. क्यों? बिकॉज ही वुड लाइक टू मेक अलर्ट टू देयर गैंग मेंबर. सो नाउ रिमेंबर व्हेन ही लिसन दिस पर्टिकुलर साउंड ही वाज स्टन्ड. किरण पुरंदरे वाज एक्चुअली स्टन्ड. वो डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आसपास कोई खतरा है या फिर आसपास कोई खतरे की घंटी है. खतरे की घंटी ये लंगूर आपको देते हैं whenever you are in the wild area, whenever you are in the woods. जब जंगल में आप रहते हो तो इस तरह के साउंड्स पे आपको फोकस करना चाहिए क्योंकि आपको इससे साउंड्स पे आगे की जो प्लानिंग है आपको करनी पड़ती है. सो the langur was sitting on the tall tree making the alarm calls. So remember now this is a very important kind of the thing. Whenever you are in the woods, किरण पुरंदरे इज नाउ फ्राइटन्ड. वो बहुत डर गए हैं. सो आफ्टर दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट हाउ ही वाज लॉस्ट इन द जंगल, उनको किस तरह से रास्ता मिल नहीं पाता और किस तरह से भटक जाते हैं अपने रास्ते से, वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन. सो विद दिस कंक्लूडिंग रिमार्क, इनटू द वाइल्ड इज अ लेसन which will definitely gives you the experience which you would like to experience in the wood. So किरण पुरंदरे यहाँ पे अपना जो एक्सपीरियंस है आपके सामने रख रहे हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर बिगिनिंग ऑफ द लेसन इनटू द वाइल्ड. सो हियर अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर न्यू एंड इनोवेटिव लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड.